Okay, CS sir, you can switch Yeah, on the recording. Huh? right. Yeah. I have switched on. Okay. Ma'am, I just want to know, are you using a Windows laptop? Yes, window. And do you have MS Office installed in it? I don't think so, but let me check Okay. if I have. Yeah. You can just search for a word. I have Word. Yeah. So we can just, if you can just switch on Word and start sharing your screen. Okay. It's visible, right? Yes, it's visible. Okay, while the Word app opens, looks like you have the latest version of MS Word, that is Microsoft 365. So we'll be good to go. So how we'll go about the session is we'll cover MS Word in 30 minutes, which is used for making documents, and in that we'll be covering advanced formatting styles, how to create table of automatic table of contents, dynamic table of contents, then how to track your changes and collaborate the document, and we'll also see how to use mail merge, and finally we'll see what is smart art and graphics. Before that, can I know, do you have any experience in MS Word earlier? Have you No, worked on it? no. Okay. In my college time, I touched little bit, Okay. gone through No with issues, those no things. issues. But This is it's perfect. So now can we I open feel the I forgot everything. it's Frankly, okay, it's okay, it's actually the technology has changed, so it's okay. So we can just click on blank document. this one. No, the leftmost one. Lots of is open on one side. Okay, okay. Okay. Blank one. Okay. Okay, just you can just maximize this, maximize the, and go to file and go to new blank document. Yes, and blank document. Yes. Okay. So now before we start, can I? So let's assume today you want to write a book. Okay. Can you tell me any topic that you're passionate about? Anything. If you had the freedom to write a book, what would you write a book on? Could I be don't anything. think It could be technical, non-technical. It could be gardening. It could be cooking. It could be anything. it could be cooking. Cooking. Okay, great. So also one more thing. Have you used Chat GPT? Sometimes, yeah. Okay. So so today what we're going to do is we're going to prepare a book that is Hmm. written by you with the help of Chat GPT, and we're going to Okay. format it properly so that it looks neat. Hmm. Okay. 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 So let's do one thing. Can you open Chat GPT in the browser? Okay. You'll have to log in. Are you already logged in Gmail? Yeah, but this. Oh, sorry. Okay, I will do Uh, it. no, if you can, otherwise you can do try it first. It's okay. Try it first. Okay. Okay. So what we are going to do is we are going to assume that you know what ChatGPT does, right? Uh, Yeah, okay. So we are going to assume that ChatGPT is your assistant, and it's going to help you write a book. So can we give a prompt like that? Can you tell what can we give as a prompt? What can we write what can we write? there? This one. Can Assume you? like suppose I assume ChatGPT is your junior or your assistant,
So Okay. what would you say? You would say, probably you would say, can you please write a book on cooking? And suppose you want to have one particular style, or Indian cooking, or something like Oh, that. You it's can, yeah, it's you better can I'm write. going with a bedtime story for kids. It's a one Yeah, word. that is also you can write that also. So you can just write, type there whatever you, a book you want to write on. Okay. Okay, voice, I don't think it will come in free. Oh, Either you can log in. If you log in, it will be better for you. uh, if your Google is already linked, you can continue with Google down. There's an option down. okay, okay. Yeah. Yeah, Continue with Google. yeah, yeah. You can press continue. Oh, uh, yeah, I'll just ask you a couple of questions. You may or may not write that. You can just press continue also if you want. okay. Thank you. Yeah. Oh no, I need it. No, mm, it's okay. Then probably you can just write a dummy here also. You just write some. Stop sharing and type it. No? Yeah, you can do that. Stop sharing. Okay. Okay, that's great. Yeah, Okay. Let's go. yeah. Let's go. So you can just type there. Uh, uh, it's better if you type entire sentences. Just before pressing enter, let's just think about it for a while. You can write. You can talk to it as if you're talking to a junior. No, don't. Please do not enter anything. Okay. Just do not see the prompts there. Just write there. Can you please write a book Okay. for Can you? WRITE. Uh, a book? book Storybook on no, it's okay. A book on on bedtime stories stories stories. in the Indian context. In Indian context. CONTEXT. Okay, and after X, there's we can delete one E after X. Yeah. Uh, okay. Full stop. Uh, it should have. It should have. Should
have I have five five five. chapters. CHAPE. Okay. Chapters. Hmm. Chapters of Of 200 words each. oh, Okay, it's fine. It's fine. It's fine. uh, So, ma'am, before Chat GPT, if you had to hmm. write a book, we would have to think about it and write. But nowadays, AI does everything for you. So you can use Chat GPT to give the exact context, and you can get a book. Okay, so Oh, great, right? So you can see that we can make the entire book on of ourselves. yeah. Okay, so what we can do is now, what I want you to do, let it write the entire book. So it's already written 5 chapters, right? In a Hmm. matter of 10 seconds. Okay. Can we just go a little up, scroll up? Yeah. Okay. So now what it has done is it has given all the 5 chapters in brief. We can, if you want, you can tell it to write in more words, or you can make it more elaborate. But for the time being, we'll take this. Can you see can you, beside SJ, there is an icon of download. Beside that, there's one more download copy app option. You can just press that. Okay. Now, can you go to MS Word? Yeah. Okay. Now, can you just press Control V? Okay, great. So we have the entire book. This is just in about one page, right? But in case if you had given more a prompt saying that each chapter has to have 200 words, it would have been longer, right? Hmm. Yes. Okay. So now what we'll do is we'll use the same thing. We'll assume each chapter has 200 or 300 words. We'll work with the same data. Okay. Sounds okay? Okay. Okay. Oh, yeah. Now Sounds good. can you just scroll up? Okay. So what Chat GPT has done for you, it has given all the data to you. Imagine this is not a one-page document. It is a, suppose, a 200-page document. So Mm-hmm. now you will have to format it. Now it will give you the data, but you need to format it, make it beautiful, to and format it so that it can be printed as a book, so that it is published by the publishers and it is easy to read, right? So that is what our entire aim of MS Word is. Okay, it is to review documents, to edit documents, to make it, to format it so that it's easier to read. Okay, now so what we'll do is now we see that there are different chapters. Now in a book we see that each chapter starts in a different page, right? Yeah. Usually the chapters start in different pages. Now we are Different seeing pages. only 3 lines, but now how would you now suppose after chapter 1, how would you put chapter 2 in a different page? Chapter page in a PTO. Yeah. Okay. No, no. How would you do that? If you can just think about it, like Add one more page. how would you do? Okay, so now the conventional way would be, how the Mm-hmm. conventional way after challenges, if you just place the cursor there, convention challenges is the last word of the first paragraph after chapter 1. Okay, 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 okay. Okay, Yeah, yeah. here, So yeah. so after the full stop, just click. So after that, you just press enter, enter. So you keep pressing enter till it goes to the second page. Okay. No, Oh, it's okay. So this is the conventional way to do it. okay. Okay. Can you just press Control Z 3 4 times? Control Z, Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Let's go back to how it was. So that was the conventional way. Okay.
But what will happen is, okay, yeah. So what will happen is, so if you do this way, each space, then it will get misaligned. You'll have to do this every time, and you'll have to uh, press enter about 10 times, right? Yeah. So there's another way how to do it. You can put a section break in this. Okay. So how do we Okay. put a section break? So if suppose this is a 300-page book, so every section we need a break. Suppose every 220 pages we need a break. So assuming the end of chapter 1 is 20 pages, so we need a section break. So now we can do that in Word. We can go to insert. Can you see the ribbon? Insert ribbon? Insert, insert. Yeah, yeah. Let me check. Insert. Yeah, insert. Okay. Just press So, insert. Okay. Yeah. So okay. So what we can do is we can see that oh no, I just press need it to once. It's okay. Yeah. Mm. So either you can do you can there are two types of break. There's a page break and there's a section break. Okay. So what we need in this is we need a section break because it is changing from chapter 1 to chapter 2. Page break we can use when it is the same chapter, but you need a break so that you need to put a image. Okay. So Okay. so now what we need to do is we need to do a section break. So for that you will have to go to design. Go to Hmm. design. Beside the insert there's draw. Beside that there's design, right? Yeah. And beside that there's layout. Design Just go, layout. yeah, just go to layout. Layout. Okay. Okay, so there you can see some option called as breaks. Yes. Yeah, just press that. So here there are different types of break. There are page breaks and there are section breaks. So what we Oh, need is a how I section want break. to break my okay. Yeah, How I want to break my things, I can correct. break it accordingly. Yeah. Okay. So now what we need in this is we need section break next page. That means the next it should go to the next page. Can you press on that? No, not that. In This section break, there's next page. Yeah. So you yeah. see that it is automatically gone to the second page, right? Second page. Yeah. 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 So now similarly, can you do it after this chapter 2? Okay. After chapter two. Yes. Correct. Correct. So now we see that we have 5 pages, right? So this is the end of chapter 5. So it's fine. So we have 5 pages instead of one. We have 5. Yeah. This is assuming that each chapter will be longer than this paragraph. So we can have it in different pages. Okay. Now can you go scroll back to first page? Okay. Okay, so great. So now let's just revise it. So if you need to break between chapters, so you can use a section break. In that you'll Section have to two. go to layout inside that breaks, and inside that you have to do section break at the end of the previous chapter, right? Yes. Yes. Hope it is clear. Yeah. Yeah. It's clear. Okay, okay. So now, okay, great. Now you see that these chapters. No, suppose suddenly I tell you, suppose instead of 5, we have 20 chapters. Now suddenly I'll tell you to go to 20 chapter. How will you go? You'll have to scroll down, right? Yeah. You'll have to scroll This. down every time. Suppose I'll tell you 20, then I'll tell you chapter 11,
then we'll have to scroll up and down, and a lot of time is wasted in that, right? Yes. So instead of that, in Word we have a thing called styles and formatting, which can which will help us to navigate easily. So okay, so now what we'll do is we'll name chapter 1. Can you Okay. just select the entire line of chapter 1? Entire line, can you select it? Yeah. No, only the chapter 1, only the title, only the title. Chapter 1, Okay. the kind elephant and the clever rabbit. Okay, this is the heading, right? This is the subheading basically, 7. Hmm. right? Okay, now Hmm. can you go to home? Yeah. Okay, now in styles, can you see a lot of things there? A paragraph, a clipboard, then you see font, then you see paragraph, Hmm. then you see styles, right? Yeah. Beside that, you can beside font, you they see a whole thing called styles, yeah, right? Yeah. Yeah. So if you just click on heading, okay, heading. Now this will create one heading for you. So what MS Word will do is, so you can just press that once. Have you pressed it? Yeah. I did it. Yeah. I Okay. think. Now what we'll do is we'll do the same thing for. Can you do the same thing for each chapter? There it is. Why is Yeah, it? you can just select chapter 2. Yeah. Hmm. Great. Great. Yeah. Great. Last chapter. It's already, this is already chapter 4, right? You need chapter Oh 5. yeah. Sorry. Yeah, it's okay. It's okay. Okay. Great. अभी जो आप are you comfortable with Hindi also? Yes. Yes. Very good. Okay. Very So well comfortable. okay, okay. So आपका जो ऊपर scrolling up and down का will find a solution for that. Okay. Now just go to view. View. ऊपर होम इंसर्ट वगैरह दिख रहा है ना, उसके बाद व्यू है, देयर इज अ व्यू टैब, होम View. इंसर्ट ड्रॉ Yeah. डिजाइन व्यू. Yeah. Yes. Now let's can you see just below view there is navigation pane? Can you see the navigation pane? Yeah. Just Yeah. select that. यही ना? Yeah, yeah, you selected that, but I don't know why it is not showing. Mm, it should probably show the headings. Anyway, left side you can see a navigation pane. Left side navigation pane. लेफ्ट साइड आपने नेविगेशन पेन दबाते ही लेफ्ट साइड में नेविगेशन ये आ गया ना, एक Okay. बिलो दैट, जस्ट बिलो दैट, दिस इज द नेविगेशन. ओके, ओके, लेट्स ट्राई अगेन. अभी कहाँ आ गया? यहाँ पे. तो ये आ गया. एक्चुअली क्या आएगा ना, यहाँ पे हेडिंग्स आते हैं. ओ ये पूरा आ गया. हाँ. यहाँ पे कैन यू रीड दैट, इट इज रिटन हेडिंग्स. इट इज Heading.
create an interactive outline of your document. It's a great way to keep track of where you are and move quickly. Actually अभी आ नहीं रहा है. लेट मी जस्ट क्लोज कीजिए एक बार उसको क्लोज कीजिए एंड नेविगेशन. हाँ ओके, जस्ट प्रेस कंट्रोल ए. कंट्रोल ए. Control A. Okay, now just go to navigation pane again. ओके फिर भी नहीं आ रहा. ओके ओके, नेवर माइंड. ऊपर ऊपर जाइए. Okay. स्क्रॉल अप. एक और चीज विल लेट्स ट्राई वन मोर थिंग. Okay. ठीक है. Okay, now can you just select title जो वो title magical bedtime stories from India ये है. Can you just select that? Yes, and go Heading. home. Hmm. Okay. Yes, वहाँ पे heading, don't press heading. उसके बाजू में can you see the down arrow beside heading? Yeah. Yes, and हाँ just press that. Okay, can you give it heading 2? Title. Title नहीं, heading 1 or heading 2? Heading 2, just can you give it heading 2? Yes, यहाँ आ गया देखिए लेफ्ट साइड में. हाँ यहाँ आ गया. हाँ Yeah. तो अभी वो चैप्टर 1 को भी वैसे ही कीजिए, हेडिंग 2 ही कीजिए. एक्चुअली हाँ हेडिंग 2 ही कीजिए इसको. Got it. वहीं दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड में दिख रहा है. अच्छा दिख रहा था. हाँ, नो इश्यूज. डिड यू प्रेस इट? Yeah, I did it. ओके, उसमें नहीं आ रहा है. ओके, हेडिंग 3, जस्ट प्रेस हेडिंग 3 इन दैट. कर दे. नहीं आ Why रहा. it is not coming in that? Okay, never mind. मुझे लगता है चैप्टर ना करके अगर इसको टाइटल करूँ तो आ जाएगा. नहीं, नो दैट उसमें नहीं है, वो वर्ड पे डिपेंड नहीं करता. एक और लेट्स जस्ट डू वन मोर थिंग. आप रैबिट के बाद, रैबिट जो वर्ड है ना उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए. आप अभी जस्ट टाइप इन चैप्टर 1. ओके नहीं, बैक स्पेस. हाँ अभी इन दिख रहा है ना, इन फर्स्ट वर्ड इज इन अ लश ग्रीन फॉरेस्ट. जस्ट पुट योर कर्सर देयर. या एंटर. हाँ उसके ऊपर जाए, दैट ब्लैंक स्पेस, प्लीज गो ऑन दैट ब्लैंक स्पेस. हाँ वहां पे लिखिए चैप्टर 1. ओके, ये क्या आ रहा है? बैकस्पेस. Backspace. Yeah. Yeah, type again chapter 1. कुछ और आ रहा है. ओके हाँ, बस चैप्टर 1 टाइप कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको हेडिंग 2, जस्ट गिव इट हेडिंग 2. नहीं आया. नहीं आया. हेडिंग 3. हेडिंग 4. नहीं आया. देयर समथिंग रॉन्ग विद इट. वो डाउन एरो प्रेस कीजिए इसमें. पेजेस में आए हुए हैं ये. हाँ वो पेजेस आएगा, देयर यू कैन नेविगेट डिफरेंट पेजेस, राइट. इसमें हेडिंग में इट विल गो टू द एग्जैक्ट चैप्टर नेवरदलेस. ओके, एक लेट्स ट्राई वन मोर थिंग, लास्ट थिंग. हेडिंग 4 के बाजू में देयर इज वन एरो, राइट. हेडिंग 4 के बाद यस. हाँ, just press that. Now give it heading 2 in this. Give it heading 2. Yeah. Okay. Heading. Just try heading again. Okay. नहीं आ रहा है. So anyway, the point is
एक्चुअली कभी कभी चैट जीपीटी वाला जो कंटेंट है उसमें देर इज अ लिटिल प्रॉब्लम इन फॉर्मेटिंग, बट आई होप यू अंडरस्टूड दी या वांट समझ में टू। आया। Yeah. तो व्हेन यू पुट इट टू हेडिंग, देन हम्म, लेफ्ट साइड में सारे इन द नेविगेशन पेन it will give you different chapters, like you have seen this, it will give you different chapters, and उसके बाद you can navigate to any chapter anytime very quickly. तो पेजेस में क्या दिक्कत होगा आपको, पेजेस में यू वोंट नो चैप्टर 2 इज इन विच पेज, 20th पेज, 21st पेज, यू वोंट नो दैट. अच्छा। So ओके। navigating through headings is better. So when you write a book, uh, हम्म, again, मतलब when we maybe we'll take it up as an assignment. हम्म, उसको instead of chat GPT हम खुद लिखेंगे, एक एक वर्ड लिखेंगे. Let's try that later. Okay. तो आपने ओके। समझ लिया ना. तो instead of where you can see left side में headings, in that हम्म, you'll have different chapters when you give it the same heading. Okay. ओके। Clear? Okay. या Now, okay. Now let's proceed to the second part. Now what we'll do is, ये styles कहाँ कहाँ काम आता है? I'll tell you one more thing. Just go to design. Just go to design. डिजाइन Yeah. जा नहीं रहा। There. Yeah. वो आएगा. Now, okay, great. तो यहाँ पे क्या है? लेफ्ट साइड में थीम दिख रहा है आपको. थीम. हम्म, जस्ट प्रेस थीम. इसमें क्या है? थीम में इफ यू वांट टू गिव अ सिमिलर, क्या बोलते हैं उसको, सिमिलर थीम टू एंटायर बुक ना, कि चैप्टर 1 का हेडिंग ऐसे दिखेगा, उसमें कुछ यू वांट टू डू सम फॉर्मेटिंग, यू कैन गिव दिस. दिस विल यूज द स्टाइल. जो जो एक स्टाइल के है, लाइक हेडिंग 1 का स्टाइल्स विल गिव अ डिफरेंट फॉर्मेटिंग, will give a different theme, and heading 2 ka it will give a different theme. So can you just select any one theme? यहाँ से uh, और नीचे आइए, और नीचे आइए. ओके, नहीं वैसा नहीं. एक काम करते हैं, उसके थीम के बाजू में वहाँ डाउन एरो दिख रहा है आपको? डाउन एरो. यहाँ नहीं, उसके राइट साइड में, राइट साइड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करके दिख रहा है ना. डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कहाँ दिख रहा है? हाँ, राइट साइड, राइट साइड. ये यहाँ। हाँ। हाँ, उसके बाजू में एक डाउन एरो है, उसके राइट साइड में. हाँ. कलर्स नहीं, कलर्स के बाजू में, कलर्स के बाजू में. यस. फॉन्ट फॉन्ट का। नहीं ओके। नहीं नहीं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड. यस. ये जस्ट प्रेस दैट. ओके। हाँ. तो नीचे टाइटल दिख रहा है जहाँ पे एक ब्लू ब्लू थीम है. हाँ, जस्ट प्रेस दिस. तो ऐसा आ जाएगा. तो सिमिलर लाइक दिस. सो ऑल योर चैप्टर 1 का जो हेडिंग है, दैट विल कम इन दिस स्टाइल. यू अंडरस्टूड? या तो उसमें समझ क्या है, गई। यू कैन इंस्टेड ऑफ आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 हर टाइम, इंस्टेड ऑफ डूइंग द सेम थिंग कि इसको बैकग्राउंड चेंज करो, फॉन्ट चेंज करो, कलर चेंज करो, यू कैन डू इट हियर ओनली. एंड जहाँ पे अच्छा। इन दिस ऑल्सो आपको ब्लू नहीं चाहिए, तो यू कैन चेंज द कलर्स, एंड इट विल हैपन एंटायर डॉक्यूमेंट में. अच्छा। सो ओके। दिस, ये तब आपको काम आएगा जब व्हेन योर डॉक्यूमेंट इज अ लार्ज डॉक्यूमेंट. इट इज, नाउ वी आर वर्किंग विद 5 page document, but if you're writing a book, it will be a 300 page document, right? So every time यस। formatting will be difficult. So this is how we maintain formatting throughout the book, and throughout the हर एक चैप्टर में सिमिलर आपको फॉर्मेटिंग दिखेगा. एक जगह चेंज किया तो आपको हर जगह ये चेंज दिखेगा. ओके। ओके. हाँ। अभी क्लियर विद दिस? तो या अभी हमने क्या कवर किया? अभी हमने किया सेक्शन ब्रेक, फिर हमने किया स्टाइल्स. स्टाइल्स मतलब हेडिंग देना. फिर हमने किया थीम, राइट? तो कुछ हम थीम दे सकते हैं फॉर ईच हेडिंग. क्लियर विद दिस? हाँ। ओके. अभी अभी क्या करेंगे? अभी नाउ व्हाट विल डू इज, नाउ इसका अभी अगर आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए, स्टार्टिंग में इंडेक्स रहता है ना. हम्म। तो अभी इसका अगर आपको चाहिए तो आप हम कैसे करते हैं इसको? अगर इसको मैन्युअली करना होता तो हम लिखते हैं ना, चैप्टर 1 पेज नंबर 1, चैप्टर वन चैप्टर दिस 2 वन। या पेज चैप्टर 2. टू दिस। तो वर्ड में देयर इज, अगर बिकॉज ऑफ द स्टाइल, बिकॉज आपने हेडिंग दिया है, यू कैन क्रिएट अ ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स. तो ठीक। ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा आपके लिए.
तो Okay. let's see how we do that. Okay, just go to insert. Insert. Okay, sorry, not insert. Can you just go to references? Layout के बाजू में है references. बेसिकली क्या है, ये आपका हेडिंग को रेफरेंस कर लेगा. तो लेफ्ट साइड में देयर इज अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, Table of content. लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट है. Okay, yeah. Left. उसके लेफ्ट साइड में एक टेबल ऑफ कंटेंट्स करके है. Table of content. उसके ऊपर एक आइकन है. Update table. Beside that, no, on the left side. No, on the left side of update. Yeah. Can you just press that? ओके, सो ओके, बिफोर दैट उसके पहले हमारा कर्सर जो है ना सबसे ऊपर रहना चाहिए. कैन वी जस्ट गो बैक टू द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी क्लिक कीजिए. नहीं, यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा है. कहाँ से ओके, लिया मैं? इसको जस्ट क्रॉस कीजिए, जस्ट क्रॉस दिस. ओके, नाउ बिफोर टाइटल. टाइटल में जहाँ है ना टाइटल, हाँ, इन द डॉक्यूमेंट, just before title press enter. उसके पहले सबसे पहले ऊपर उसको, ओके, कंट्रोल जेड, वो ही चला गया. उसको जस्ट लेफ्ट, जस्ट प्रेस द लेफ्ट एरो बटन, लेफ्ट एरो, हाँ, प्रेस एंटर. ओके, प्रेस एंटर. अप एरो. ये मैक्सिमम जा रहा है आपका, और ऊपर जा रहा है. नहीं जा रहा है, मैक्सिमम है. ओके अप एरो ओके का. ओके ओके, लेट्स डू वन थिंग. एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल जेड. ओके 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 ओके, बस एक सेकेंड. नाउ जस्ट गो टू टाइटल. टाइटल के नहीं, जो वर्ड है टाइटल, हाँ, जस्ट लेफ्ट मोस्ट प्रेस कीजिए. यहाँ प्रेस करूँ? नहीं, जो फर्स्ट वर्ड है टी के पास प्रेस कीजिए. हाँ, अभी एंटर. नहीं, टी के पास प्रेस करना है आपको, प्रेस द कर्सर. ओके, हाँ, नाउ गो अप. ओके, नाउ गो टू रेफरेंसेस. नाउ यू कैन जस्ट, हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स. इसमें ऑटोमेटिक टेबल जो है ना, यू कैन सेलेक्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल. लेट्स सेलेक्ट ऑटोमेटिक टेबल. ओके, Okay. Nice. कैन यू जस्ट स्क्रॉल अप. हाँ, तो ये क्या है ना, तो ऑटोमेटिक नाउ बिकॉज वी हैव गिवन द हेडिंग्स, तो इट इज ऑटोमेटिकली गिवन अ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स. सो Yeah. आप नाउ कुड यू सी द मैजिक ऑफ स्टाइल्स एंड हेडिंग्स. Yeah. या सो अभी जस्ट बिकॉज हमने थोड़ा वो जो हेडिंग चैप्टर 1 एंड टाइटल में थोड़ा हमने वी डिड अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट थिंग्स वी ट्राइड, इसीलिए चैप्टर 1 आपको थोड़ा ऑफसेट दिख रहा है. और इफ यू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, इफ यू डू इट प्रॉपरली, तो आपको एक साथ दिखेगा आपको. एंड Okay. या राइट. सो अभी क्या है, ये आपको मिल गया ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स, राइट. तो अभी आपने सपोज उसके बाद आपने डिसाइड किया चैप्टर 2 में और आपको 2 पेज ऐड करने हैं, तो आपने लिख लिया सपोज. ओके, जस्ट कैन यू स्क्रॉल टू, अभी जस्ट विजुअलाइज दिस. चैप्टर 3 आपको दिख रहा है थर्ड पेज पे, है ना, हाँ. है ना. नाउ अभी हमें क्या करना है, चैप्टर 2 में 2 और पेज ऐड करने हैं. तो आइडियली क्या होना चाहिए चैप्टर 3 का पेज नंबर? चैप्टर 3 2 और ऐड कर दूंगी तो इसका 5 होना चाहिए. इट विल बी 5, राइट.
4. Yeah. So Do in a I yeah, 5 correct. हो गया. It will be 5. So in a conventional way, we'll have to every time हमें trace करना पड़ेगा chapter 3 में कौन सा page number है. But this is allowing you, this will automatically update. I'll show you how it will update. Okay. Now can we go Okay. to chapter 2? Chapter 2 के पास scroll down करेंगे. Chapter 2 के पास यहाँ या नीचे जाऊँ? नीचे 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 जहाँ पे पूरा chapter 2 का पूरा चैप्टर 2 मसाला है. हाँ. फॉर्मेट. हाँ. ओके. तो यूनिकनेस दिख रहा है ना, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए. ओके. एंटर. हाँ. ओके. ग्रेट. तो अगर अभी हमें हमें वी नीड टू ऐड समथिंग 2 पेजेस. ठीक है. तो अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम होता तो हम पूरा स्टोरी लिखते. बट नाउ व्हाट विल डू इज वी डोंट हैव टाइम. तो विल एक फंक्शन है यहाँ पे. देयर इज अ फंक्शन ओके इन एक्सेल दैट इज कॉल्ड रैंडम जनरेटर. रैंडम टेक्स्ट जनरेट करता है वो. ठीक है. तो विल अच्छा. जस्ट प्रेस इज इक्वल टू इज इक्वल टू RAND AND ब्रैकेट. ब्रैकेट. Okay. एक सेकेंड. नाउ इफ वी जस्ट प्रेस RAND एंड डबल ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट, क्लोज द ब्रैकेट, देन इट विल जनरेट 3 पैराग्राफ्स. ठीक है. बट अभी मत कीजिए, अभी जस्ट मत कीजिए, जस्ट प्रेस बैक स्पेस. हाँ. तो बट उसमें अगर आप कुछ पैरामीटर देते हैं देन इट विल जनरेट व्हाट यू वांट. अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें अराउंड 2 पेजेस का कंटेंट चाहिए. ठीक है. तो व्हाट विल डू इज, और अगर हमें चाहिए अभी वी जस्ट नीड टू फिल 2 पेजेस राइट. सो सपोज आई विल टेल ये डाल आई दो. वांट. रिवर नो 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 गंगा. They will नो 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 increase the paragraph accordingly. Okay. नो नो नो. नहीं नहीं, इसमें क्या है ना, इसमें पैरामीटर ये चाहिए कि यू विल हैव टू गिव हाउ मेनी पैराग्राफ्स यू वांट एंड हाउ मेनी लाइंस यू वांट इन ईच पैराग्राफ. तो Okay. सपोज वी टेल 10 10 10. comma 5. So what this will give is, this will give you 10 paragraphs of 5 lines each. But ये Okay. बहुत ही random words है. It will be very random sentences. Can you close the bracket? Okay. Okay, press enter. Enter, not space. I think आपने space enter किया है शायद. हाँ. नहीं. इंटर के लिए सर नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा मुझे. No, I think enter नहीं हो रहा है. किया मैंने. हाँ अभी हुआ राइट. अच्छा. ओके. ओके. जस्ट स्क्रॉल डाउन कीजिए. कितना how much it is the same paragraph but it is just repeating. Okay, can you go up? 1 2 3 4 5 10. Yeah. Okay, great. So it has given you 10 paragraphs of 5 sentences each, right? तो हम Yeah. हमारा जो काम था वो हो गया ना. हो गया. 2 हाँ. पेज एक्स्ट्रा कर दिया. तो now can you go up to the table of contents? Table of contents. Yes. Yeah. तो इसमें तो 5 दिखाना चाहिए ना, 5 या 4 दिखाना चाहिए चैप्टर 3 का, बिकॉज हमने एक पेज ऐड कर दिया. नाउ इट इज नॉट शोइंग. हाँ. क्यों? रिफ्रेश करना पड़ेगा. करेक्ट, एग्जैक्टली. तो वो जस्ट कंटेंट्स के टेबल के पास क्लिक कीजिए कहीं. आपको हाँ ऊपर देखिएगा अपडेट टेबल. या अपडेट पेज नंबर्स ओनली. पेज में. ओके. हाँ, अगर आपने कुछ टाइटल में चेंज किया है देन यू कैन राइट अपडेट एंटायर टेबल. राइट. ओके. अभी देखा, कैन यू सी द मैजिक? It's चैप्टर magic 3 is हैज बिकम 4, राइट? So this makes your life so easy as a book writer. Correct? okay. Yeah. Okay. Okay. Very So useful. understood this, na? Table of contents. Yeah. Understood. ओके. सो ये और टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लिया हमने, और कैसे इसको ऑटोमेटिकली अपडेट करता है वो भी देख लिया हमने. ठीक है. नाउ अभी अज्यूमिंग यू हैव रिटन द एंटायर बुक आपने. ठीक है. आपने 5 चैप्टर लिख दिया एंड नाउ यू वांट टू गिव इट टू योर एडिटर. Okay. Okay, you want to give it to your editor to verify the entire thing. आप बोलोगे कि
you read the entire thing and you check. Now उसमें क्या होगा? Okay, before everything else, can we save the document? Can you Save. just save it before we lose any of the contents? File, File. Okay. save as. Yeah, so enter file name. आप file name दे दो बेड टाइम स्टोरीज या ये क्या बोल रहा yeah. Okay, No. you can just press cancel. उसमें हाँ, just write bedtime stories. You can, okay, so नीचे you can save it in desktop. No, 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 you'll have to save it. Yeah, desktop में save कीजिए, desktop press कीजिए. Yeah, it's okay, just save it, just press save. Let's see. Okay, it needs your sign in. Oh, uh, okay. Okay, maybe I think, okay, just एक काम करते हैं, just press cancel. Left side में you're trying to share it in the drive, but left side में you have to share it in this PC. Please select this PC. Yeah, here you save it. You can just save it here. save. Yeah, Done? okay, done. Okay, this is saved. Now what we need to do is abhi you are the author of this document. Okay, Document. Okay. Sarita Jha, you are the author of this document. Now you want to give it to some editors. Now अभी क्या करेंगे? एडिटर ने कुछ चेंज कर दिया तो how will you know? Suppose chapter 1 में एडिटर ने ही they introduced a spelling mistake. आपने तो सही लिखा था, but they introduced a spelling mistake. एंड वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हो गया है, एंड इट इज अ 300 पेज डॉक्यूमेंट. हाउ विल यू रीड इट अगेन एंड हाउ विल यू ट्रैक इट? इट विल बी डिफिकल्ट, राइट? Right. So Then. now in this it will give you an option to track changes when you share it with someone. Okay, Okay. so now what you can do is ऊपर इसमें can you see review? या सो मैं इसमें काफ़ी सारे चीज़ें हैं. आई विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट इन दिस इफ यू आर ऑथर ऑफ द बुक यू कैन ऑल्सो चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर योर सेल्फ. लेफ्ट में Yeah. आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर दिख रहा है. यू कैन डू द वर्ड काउंट, यू कैन डू एवरीथिंग ऑन इट सेल्फ. अभी क्या चाहिए? अभी हम वी आर डूइंग फास्ट फॉरवर्ड, वी आर गिविंग इट टू द एडिटर. तो राइट साइड में कैन यू सी ट्रैकिंग? या just press that. So now you just enable track changes. Niche there is a icon, right? Track changes. Yeah, for everyone. Yeah, come back. Yeah. Come back to the document. Document. हाँ, ओके. नाउ सपोज आपने ये, आपको इसका मैं आपको ये बताता हूँ व्हाट इज द एडवांटेज. कम टू द लास्ट वर्ड ऑफ चैप्टर 1, चैलेंजेस करके दिख रहा है ना? Yeah. Yeah, just write, suppose after full stop write something, dummy change, right? Just write dummy change. Yeah, आपने लिखा एंड लेफ्ट साइड में देयर इज अ ट्रैकर. कैन यू सी दैट ट्रैकर? Tracker. लेफ्ट साइड में एक रेड लाइन आ गया, रेड लाइन उसी डॉक्यूमेंट में. हाँ उसी Yes. रेड तो दिखा ही लेफ्ट साइड में. beside kindness वर्ड के बाजू में there is a left thing that is there. मुझे दिख क्यों नहीं The रहा? first word of the last paragraph, last line. हाँ. फर्स्ट वर्ड जो kindness दिख रहा है ना, kindness फर्स्ट वर्ड है. Oh, ये वाला. Okay. हाँ, वो so it will give you markers everywhere. ठीक है? Okay, now let's go back to review. Okay, now here it will tracking के बाजू में there is something called as show markup, right? show markup भी है लेफ्ट साइड में. हाँ, and उसके नीचे reviewing pane है, reviewing pane. Yeah, just press that. Yeah,
वर्टिकल। सो आपको ये दिख गया, एक चेंज आप किसी ने किया है, राइट? So if you share this with someone and when they give it back to you, you can, if your tracking is enabled by the author, then after that you will be able to see every change that anyone has made. You don't have to see word by word. You can see कि आपने जो लिखा था and अभी क्या ऐड किया है. You can just compare that and see if it is required by you or not, and then you can accept or reject a change. Okay. Did you understand this? Yeah. Got So it. so इसका this is why this is powerful is कि बार बार कोई 300 पेज डॉक्यूमेंट पढ़ नहीं सकता. आपने एक बार पढ़ लिया मन से, उसके बाद चेंजेस ही ट्रैक करोगे. यू जस्ट ट्रैक द चेंजेस, राइट? और या फिर जो भी मैंने सबमिट किया उसमें किसी ने चेंज किया या एज इट इज गया करेक्ट, है. करेक्ट. तो यू विल नो दैट एंड यू कैन सी, अंडरस्टैंड कि एडिटर ने जो किया है सही किया है कि नहीं किया है. ओके, नाउ वी हैव सीन ट्रैक चेंजेस, राइट? ओके, नाउ उसमें okay, yeah, okay, now this is the, now can you just close the revision pane and close the navigation pane as well? Okay, now what we'll do is अभी track changes को अभी ठीक है रहने देते हैं, let's keep it like that. Now what we'll do is अभी आपने edit भी करवा लिया, ठीक है? Now what you want to do is you want to send it to the publishers. पब्लिश. Okay, हाँ. now आपने ये okay, ये तो एक content बन गया. Now can you do one thing, can you just press Control N? कंट्रोल एन. हाँ, तो इसका मतलब क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट है, ठीक है? आपका वो बुक बन गया, पूरा कंटेंट्स बन गया, और पूरा कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स बन गया, चैप्टर 5 बन गए. नाउ यू वांट टू सेंड इट टू द एडिटर ने भी चेक कर लिया. नाउ यू वांट टू सेंड इट टू द पब्लिशर. नाउ यू वांट टू राइट अ लेटर. ओके, सपोज यू वांट टू राइट अ लेटर. जस्ट राइट, कैन यू जस्ट टाइप डियर sir slash madam. Okay, comma, enter. Okay, just write, अभी इसको शॉर्ट करते हैं, प्लीज रिव्यू, प्लीज REVIEW. ओके, ये लेटर भी आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, बट दिस इज जस्ट अ डमी थिंग. सपोज आपने पूरा लिख लिया है, यू हैव रिटन प्लीज रिव्यू माय बुक एंड प्लीज सी इफ यू कैन पब्लिश इट करके आपको रिक्वेस्ट करना है. यू वांट टू रिक्वेस्ट अ पब्लिशर टू पब्लिश इट. ओके, ऐसे पब्लिशर्स बहुत है ना, ईसी पियर्सन, लोकल पब्लिशर्स, वी हैव सपोज हंड्रेड्स ऑफ पब्लिशर्स. तो आपको 100 लोगों को मेल भेजना है, एंड बट आपको ये भी करना है कि आपको सबका नाम भी पता है, एंड यू वांट टू कीप इट पर्सनल, यू वांट टू मेक इट पर्सनलाइज मेल चाहिए. जैसे आपको कभी कभी एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं ना कि डियर सरिता झा मैडम या कुछ आता होगा ना, नाम के साथ आता है. तो नाम नाउ के साथ वी, हाँ, तो वी डोंट वांट टू कीप इट जस्ट सर और मैडम. So we want to do it with name, and also we don't want to waste our time typing 200 names. अगर हमारे पास already एक list है publishers का, we don't want to waste time writing everyone's name. तो उसमें एक option दिया है word में, it is called mail merge. Okay, ओके. तो let's see how it works. अभी हमारे पास ज़्यादा time नहीं है, I understand we have only 5 minutes. Can we extend it by 5 more minutes, or are you in a Yeah. I don't have yeah. anything. Okay, Any okay. problem. So We can okay, extend it. let's extend it by 5 to 10 more minutes. Let's aim to end within 15 minutes. Okay. So Okay. yeah. Yes, there may be another session at the same Oh, time. okay. I think we Okay. can continue on Friday. If you Okay. can, yeah, you can just, Last I'll just take yeah. 3 minutes. I'll just take 3 minutes. Sure. उसमें क्या होगा, मैडम आपको मैं ये I'll just explain the procedure, and उसके बाद आप you can either you can explore it on yourself, or we can continue tomorrow. Okay. ऊपर मेलिंग्स करके दिख रहा है आपको, मेलिंग, जस्ट प्रेस कीजिए. उसमें एक्चुअली क्या है, उसमें लेफ्ट साइड में
सेलेक्ट रेसिपिएंट्स करके आएगा, कैन यू सी? हाँ, उसमें just press it once. Now in this you'll have three options: type a new list, use a existing list, और यूज फ्रॉम योर आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। तीन चीज है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक एक्सेल शीट है जिसमें सब नाम एंड ईमेल आईडीज है, देन यू कैन आइदर यूज दैट। बिकॉज वी डोंट हैव इट, वील क्रिएट वन, वील शो यू हाउ टू क्रिएट वन लिस्ट ऑन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, उससे क्या होगा ना, हम अगर 5 नाम लिखेंगे, इट विल ऑटोमेटिकली टेक द नेम्स एंड द ईमेल आईडीज एंड इट विल क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट फॉर यू। Okay, so I तो don't need to do it personally. हाँ, यू डोंट हैव टू डू इट मैन्युअली। आपको 200 के नाम नहीं लिखने हैं, 200 का ईमेल आईडी नहीं लिखना है, एक ही फाइल क्रिएट करनी है एंड इट विल ऑटोमेटिकली डू इट। Okay. ओके, दिस इज द पावर ऑफ वर्ड, एमएस ऑफिस एंड ऑटोमेशन। ओके, सो Okay. इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आई विल जस्ट गिव यू वन असाइनमेंट इफ यू डोंट माइंड। Yeah. we will give an assignment of use chat gpt to to make one letter for to publish your book. ओके, Okay. Okay. आप चैट जीपीटी से एक लेटर लिखवाइए, एक इन दिस वर्ड प्लीज राइट अ लेटर and let it be dear sir or madam only, but let the formatting be correct, मतलब let it be Proper way. about 1 page का document. Okay, Okay. ठीक है। Okay. Okay. Okay, so I will do. actually let's just revise quickly, अभी we have 2 minutes, let's just revise what we have done. अभी हमने किया advanced formatting styles, उसमें पहले हमने पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक देखा, देन हमने स्टाइल्स देखा, हेडिंग्स देखा, then we saw how to apply a theme to each heading. Then we went to how to make a automatic table of contents and how to make a dynamic table of contents which changes automatically. फिर हमने देखा कि इसको चेंजेस को ट्रैक कैसे करता है, ट्रैकिंग ऑन कैसे करता है, हाउ टू स्विच ऑन द ट्रैकिंग एंड हाउ टू नो इफ देयर आर एनी चेंजेस। Any लास्ट में, changes? या लास्ट में वी आर अबाउट टू सी मेल मर्ज, how to make a mailing list and how to automate the mail merge. This we'll see in the next class. Next class. Okay. Actually the plan for today was ms word and ms powerpoint, but we will, it's okay, we will take it in the next class. Next class हम word को finish करेंगे, फिर हम powerpoint पे जाएंगे। ठीक है, ओके। एंड इस पे हमने एक छोटा सा असाइनमेंट दिया है, प्लीज यूज चैट जीपीटी टू मेक अ And लेटर write a letter. एंड Okay. उसको कॉपी करके एक नया डॉक्यूमेंट में डालिए एंड उसको सेव कीजिए एज लेटर। ओके Okay. ओके, Okay. एनी क्वेश्चंस मैम? नहीं कोई नहीं, कल मैं ओके, एंड प्लीज लेट मी नो इफ द स्पीड इज स्लो और फास्ट, नेक्स्ट टाइम वी कैन चेंज अकॉर्डिंगली। अगर कुछ भी क्वेश्चंस है, इधर यू कैन आस्क नाउ और यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास, और यू कैन आस्क बाय ईमेल आल्सो एनी टाइम। और वन मोर थिंग, वेयर कैन Yes, आई ma'am. गेट दिस रिकॉर्डिंग्स? मुझे रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी इनकी? ये recording I'll just I have to ask CS sir. He Yeah, will publish it on I YouTube. will put it on YouTube and send you the link, madam. Okay. Okay, okay. Thank you, sir. Yeah. Yeah. Okay, ma'am. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Let's So close for today. thank you very much, Srinivas. Thanks for the session. So the next session is on Friday, right? Not tomorrow. No, we can have it tomorrow also. Tomorrow. Okay, we'll have it tomorrow then. Yeah. Okay. Okay. Yeah. 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 Thank Yeah. you. Mhm. Thank you.